Why do you want to leave your current job? Why do you want to change? मेरा करंट एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, मेरे करंट एम्प्लॉयर ने कमिट कुछ किया था, दिया कुछ है. What you have done till now with your current employer? और आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का एक सही आंसर ढूंढते हैं. Why do you want to leave your current job? Why do you want to leave your company? Why do you want to change? ये क्वेश्चन आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाना है और आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का एक सही आंसर ढूंढते हैं. तो चलें देखें क्या हो सकता है वो राइट आंसर. बट राइट आंसर जानने से पहले मैं कुछ आपको गलत जवाब बताता हूं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो बहुत सारे एप्लीकेंट अपने इंटरव्यू में बोल जाते हैं. And I've been like categorizingly, noticing that because I really didn't like the way they really responded on it. जैसे एक prominent answer कहीं पर आपको मिलेगा that my company has huge politics. It is really bad over there. So it is very toxic and it is very difficult to stay over there. No, not done. एक और चीज जो बहुत negative करती है is something like my supervisor is not that cooperative. I have no motivation to be there. I really see that I'm very much stuck over there. I have no growth prospects over there. I have no growth prospects over there. It is very, very, I would say I have a ceiling over there in terms of my growth and so on and so forth. I'm changing for the financial reason. I really want to, get more money, get hike in salary and so on and so forth. All of these answers are not the good one. बट बहुत सारे एप्लीकेंट बहुत कॉमनली इसको बोल जाते हैं. ईदर दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उससे, या जिस माहौल में जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे होते हैं उससे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, या ऑफ कोर्स सैलरी ग्रोथ, डेजिग्नेशन ग्रोथ उन्हें नहीं मिल रहा होता है एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, किस तरह से हमें वो मिल जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये बड़ा कॉमन रीज़न आपको मिलेंगे जो विच इज़ रियली मोटिवेटिंग एनी एम्प्लॉय टू रियली लीव एनी ऑर्गेनाइजेशन. बट आप अगर इंटरव्यू के अंदर इस तरह से कोई रीज़न देते हो, इस तरह से कोई रीज़न दे देते हो, then it will not go very well for you. Because somewhere it will come across as if you're not happy with your current organization or your current supervisor or your current set of affairs or your current, I would say, designation, your pay scale and so on and so forth, which can be the reason, but there is a different way of mentioning it, of saying it. Let's see what is the right approach for dealing with this. I have 4 things that you should always know when you're answering something like this. सबसे पहली चीज, you should never bad mouth your current employer. मेरा current employer अच्छा नहीं है, मेरे current employer ने commit कुछ किया था, दिया कुछ है, मेरा current employer सुनता नहीं है, politics बहुत ज़्यादा है. मुझे उस employer की bad mouthing, उसके बारे में बुरा भला बिल्कुल भी नहीं बोलना है. Because that will simply go against you. This is not something that I would anyway recommend to anyone that ये आप करिए. बिल्कुल और बिल्कुल avoid करना है. That is the tip number 1. The second thing that you really want to know is, and you really want to have that at the back of your mind, is that you should somewhere say that what you have done till now with your current employer has gone really well, and you have a good relation with your current employer, good relation with your current supervisors, and you want to carry out that, and for that you would be leaving this company on a good note. Somewhere आपकी डिस्कशन में किसी तरह से ये पॉइंट आना चाहिए. मैं एग्जाम्पल आंसर भी दूंगा टुवर्ड्स द एंड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू फ्यू हिंट्स दैट यू शुड रियली हैव. एक, अपने करंट एम्प्लॉयर की बैड माउथिंग या बुराई कभी नहीं करनी है. दूसरा, मैंने किसी न किसी तरह से अपने आंसर में दिखाना है कि थिंग्स हैव रियली गॉन वेल इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव डन, द वे आई हैव डन, एंड my supervisor and I have a very strong relationship. He understands me, I understand him, and things are really going really good, but for XYZ reason I really want to change, and he's very supportive on that. That's one way to really convince the interviewer that you're close, you're important to your current employer. Third, which is again I would say sort of an important thing for you to know, is that आप अपना एक्चुअल रीज़न कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में आप बोल सकते हो इंटरव्यू में. एंड आई हैव सीन दिस एट वेरियस ओकेजन्स कि कई बार आपका रीज़न ये होता है कि आपका जॉब फिटमेंट नहीं है. आप जो जॉब कर रहे हो
it is not meant for you. You know, you are meant for a different role, and what you're doing is a different role. Or, you know, you are right now working in a profile which would not lead you to a place where you can and you should reach over a period of time. So you probably, you know, want to take a different route. ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है, एंड यू नो यू कैन हैव ए सेंस चेक ऑन दैट कि मेरा एक्चुअल रीज़न क्या है. एक्चुअल रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी शिफ्ट हो रही है, कहीं बाहर जा रही है, और यू नो यू डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर होम, तो आप इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर आपको रीज़न वो लेजिटिमेट लगता है, जैसे कि यू नो रीलोकेशन का यू नो रीज़न लेजिटिमेट होता है, यू नो ये भी लेजिटमेट है कि जो रोल मैं कर रहा हूँ वो रोल लॉन्ग टर्म में यू नो वुड नॉट बी हेल्पफुल टू मी, बिकॉज कंसिडरिंग व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आई हैव गेन्ड, व्हाट आई हैव यू नो व्हाट आई हैव क्वालिफाइड फॉर, यू नो दैट वुड नॉट हेल्प this profile over a period of time. A classical example देता हूँ फाइनेंस में, that you know if I have somebody in finance, you know, who has been given an opportunity to work in finance, but he does not have a you know a base in finance. You know, maybe he's an MBA in finance, but he's more on the analytics side, and we have put it the guy on the accounting, on the reporting side. So that guy might say that you know जो मैं कर रहा हूँ, it is not something that really goes well. You know, of course मेरे को कंपनी ने ऑफर किया, I've joined them, I'm doing it, I thought that will work for me. But you know, over a period of time, I have realized that you know this is not my cup of tea, and you know maybe I'll be doing something different. I should be doing something different, and so on and so forth. So actual reason को analyze जरूर करो, और अगर आपको लगता है legitimate है तो actual reason बोलो, because ऐसा नहीं है कि employer actual reason नहीं सुनना चाहते हैं. We actually want to hear those actual reasons, because अगर हमें आपका वो actual reason पता होगा, तो हम अब जो आपको रोल देंगे, हम आपको जो अब जॉब देंगे, उसके अंदर वो कमी नहीं आने देंगे, उसके अंदर वो गैप नहीं आने देंगे. एक ये भी यू नो बहुत सारे एप्लीकेंट्स इस चीज़ को बोलने से कतराते हैं दैट दे आर लुकिंग फॉर ए सैलरी ग्रोथ, और दे आर लुकिंग फॉर ए डेजिग्नेशन. जैसे मैंने कहा कि यू नो सिंपल प्लेन मरीला आंसर तो आप नहीं दोगे दैट यू नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ए जंप और दिस काइंड ऑफ ए ग्रोथ. ऐसा नहीं बोल के आई कैन अगेन बी वेरी पॉलिश्ड इन टर्म्स ऑफ सेइंग दैट यू नो what I've done, you know, over last 2 to 3 years of time with XYZ company, I think you know the contribution and the achievement has been phenomenal. You know, and testimony to that fact is that my employer really resonates that, and you know he has given me 2 promotions over last 3 years of time. So you know it has been really going fine per se. But what I feel is that you know from the compensation standpoint, you know the compensation that you know my current company offers at the level where I am, and you know the kind of experience that I'm really demonstrating, that somewhere does not commensurate with it. I think you know market is offering very different you know pedigree or a scale to a role that I'm managing, and I've spoken to my supervisor also on this, and you know while he understands that, you know he is also very much bounded by the rules of the organization. So you know he certainly says that you know I understand that you deserve more, you can get more, but unfortunately I can't help you there. So I understand that, and you know I don't want to push him too hard on that, and that is one of the reason you know I'm trying searching something out कि देखता हूँ ट्राई करके कुछ you know if I can get something bigger or different or you know more than what I'm drawing right now. So that's again another reason. Very important that actual reason को एक सही तरीके से बोला जाए. तो 3 हिंट हमने कर लिए. एक हमने कहा कि हम करंट एम्प्लॉयर की बुराई बिल्कुल भी नहीं करेंगे. दूसरा हमने कहा कि हम ऐसा कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाएंगे दैट यू नो हमारा रिलेशन हमारे करंट एम्प्लॉयर के साथ अच्छा है और मैं अच्छे नोट पे छोड़ना चाहता हूँ और यू नो ऑफ कोर्स उसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ. तीसरा मैंने कहा कि एक्चुअल रीज़न को अगर मुझे लगता है वो लेजिटिमेट है तो उनसे कहीं ना कहीं आंसर में डालूँ, बिकॉज मैं लास्ट थिंग चाहूँगा कि जो मैं करंट स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरी फ्यूचर स्ट्रगल भी हो. तो मैं अगर उसे एक्चुअल रीज़न बता दूंगा इन सम शेप ऑफ मैट, सही तरीके से, सही आई वुड से वे में, सही अंदाज में, आई एम श्योर यू नो द एम्प्लॉयर विल अंडरस्टैंड एंड वो गलती या वो प्रॉब्लम मुझे वो दोबारा नहीं आने देगा. एंड यू नो मुझे ऐसा लगता है एक चौथी चीज़ जो अगेन आई वुड गिव यू एज ए हिंट इज दैट डू कॉन्सेंट्रेट ऑन द न्यू रोल एंड द न्यू कंपनी. आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करो और शायद ये बोलो कि what I feel is that you know the new role that is there that your company is offering you know really resonates well with me, really would be a good value add to me, and you know I see that you know what I've learned over a period of time, you know it will be a good value add to me, as well as you know I would be a good value add to the organization, considering I'm coming up with such a good and detailed experience.
So effectively, what I'm trying to showcase over here is कि मैं करंट रोल को समझ रहा हूँ, करंट कंपनी को समझ रहा हूँ, उनके एम्बिशंस को समझ रहा हूँ, एंड दे हैव अ वेरी गुड एम्बिशन, एंड आई थिंक दैट रियली रेजोनेट वेल विद मी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ दैट आई रियली वांट. और व्हाट आई फील इज दैट कि मैं अगर जुड़ता हूँ तो ये मेरे रोल को कॉम्प्रीहेंड करेगा, मेरे प्रोफाइल को कॉम्प्रीहेंड करेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, और कंपनी को कॉम्प्रीहेंड करेगा इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एड दैट दे वुड गेट फ्रॉम मी. तो दोनों इकट्ठे ग्रो करेंगे और इकट्ठे आगे बढ़ चलेंगे. Is that clear? Yes, sir. That is something, my friend, I really want you to know. ये 4 tips to handle, a question which is, I can tell you, which is spoken up and discussed in each and every interview, can really, do a wonder to you. Practice some I would say answers yourself on this. अगर मेरी को help चाहिए तो do comment in the comment box below. I'll be more than happy to come over there and really give you my tip, my 2 cents on that in terms of how you should be handling that. If you like the video, तो एक like का तो बनता ही है, because that would motivate me, my friend, in terms of knowing that I am really being able to add value to you. I'll see you again, my friend, in the next one. But till then, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो जब भी आए आप तक सबसे पहले पहुंचे. And do not forget, you have to keep learning, my friend. Keep learning for being the better you. I'll see you again in the next one. Till then, this is Pankaj Dhingra signing off.